So guys, I'm now unboxing the Asus Zenfone 5Z 6GB RAM 128GB ROM variant. Now unboxing the Big Billion Day Flipkart special. This is the box and this is view. So this is Asus Zenfone 5Z. Let's open. Let's open this plastic. It's very tight. And this is the device, Asus Zenfone 5Z. Put it side down and let's check it's in this box. And this is the back case. This is normal transparent back case. Not good quality, but it's okay. And this is Asus Zenfone की कुछ paperwork. And this is the warranty card. And this is user manual. इसमें लिखा है आपको इस फ़ोन को कैसे यूज़ करना है और सिम को कैसे लगाना है, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है. तो आप इसके अंदर भी आपको कुछ IME का कोई स्टिकर भी मिलता है आपको, तो आप चाहे तो इसको अपने फ़ोन पे ऊपर लगा सकते हैं. और माय डिवाइस Asus Zenfone 5Z 6GB and 128GB ROM variant. And open the box. अब देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर. This is USB type C cable and this is adapter. इसको यहाँ कनेक्ट करके so this is fast charger, right? This is fast charger. This is USB type C cable and this is earphones. This is quality earphone. Let me start boot on this mobile. फिजिकल ओवरव्यू दिखा देता हूँ. यहाँ पे ये वॉल्यूम रॉकर्स एंड दिस इज पावर बटन एंड दिस इज USB type C cable slot. This is the speaker and this is a primary microphone and this one 3.5 headphone jack and this is the slim slot and this one secondary microphone. और बैक साइड पे 12 + 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा एंड LED फ्लैश एंड दिस इज फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये Asus का ब्रांडिंग.
it's booting. Yes. Let me set up this. So let's start this set up this phone. English India. Next. Wi-Fi. Next. Connect your Wi-Fi. This is connecting. Next. Checking for updates. Now I'm setting my fingerprint. यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट रख के आप फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं। ये हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है। Successful completed its fingerprint, and no, this is not completed. Now it's finished. Next. So मैं अब मेरा सेटअप कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये है इसका इंटरफेस। इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इट्स वेरी फास्ट। मैं इसको टच करते ही ये तुरंत ही ओपन हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 128 GB रैम का फ़ोन है, तो आपको कितना स्टोरेज यूज़ करने के लिए मिल जाता है। स्टोरेज तो आपको 128 GB में 113 GB आपको यूजेबल मिल जाता है। इसको आप रैम भी 6 GB में 4 GB फ्री है अब तक, लेकिन पता नहीं कि आपको आपकी ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद कितना फ्री बचता है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आपको अब कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज द कैमरा इंटरफेस। ये नॉर्मल कैमरा है और ये वाइड एंगल का काम करता है। काफ़ी बढ़िया कैमरा है। 2x जूम 4x जूम मिल जाता है आपको। और आपको प्रो मोड और काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाता है इस फ़ोन पे। आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है। शायद आपको यहाँ फोकस करके आप कितने चाहे तो ब्राइट और डेप्थ को सेट कर सकते हैं।
Thanks for watching. Please do subscribe my channel.